Good evening. Today we are starting with modulus. You can check. Good evening. You can check any CAD paper in last 4 years, any slot. You will definitely have 1 to 2 questions of mods. Usually they are about finding maximum value, minimum value, number of integer values. If you look at CAT 2022 afternoon slot, you will find 3 questions of mods in a single paper. So modulus will be a very detailed or a concept that we'll cover in a much detail. Let us start the theory. And it's a technical concept. If you do not know the theory, randomly putting numbers, randomly checking options will not help you much. You must know what a mod is, how does a mod work, how do we open modulus, how do we plot graph of modulus. Let us start. Now, first of all, what is a modulus? What exactly is a modulus? Modulus is basically there to avoid negative outcomes. Modulus does not allow a negative value to come out of the brackets. If I draw 2 lines, this is what we call a modulus. 2 lines, modulus. You put a positive number inside, let us say 3, the outcome is 3. You put inside 0, the outcome is 0. When the number is either positive or 0, modulus performs no change. But once you put a negative number inside, it gives you a positive value outside. Now, how does a modulus convert a number to positive? See, modulus basically is a set of 2 lines. It is you who must fulfill the property. You must fulfill the desired calculation. You must fulfill the desired calculation. You must do the desired calculation. That is, once you realize the value inside is -3, value inside is -3, it is you who will multiply -1 with it. So -1 into -3 is 3. So modulus cancels the negative sign by applying -1 outside. Modulus is also called absolute value function. Either you say fx is equal to modulus x, or you can also say fx is equal to abs x, absolute value. See, 3 makes no change, -3 makes it positive, +3, absolute value function. They are both same. So take a minute, write it down, comment done. Modulus is there just to remove negative sign. अगर negative है ही नहीं अंदर में, it makes no change, it performs no change. Confirm done.
Done. Chalo. Now, this is the way of representing modulus. Now, there is a little advanced way, function-based way. So I want you to observe how it is written actually. If you write, let us say, fx is equal to modulus of x. Now, this is called conditional output. If x is more than or equal to 0, modulus opens without a change. See, if it is positive or 0, more than is positive, equal to 0 is this condition. If it is more than equal to 0, modulus makes no change. fx is equal to x. But if you know this, you are aware of this, अंदर में negative है. See, inside the value is negative. You know this. You know the value is negative. Now it is your job to multiply minus outside. It is you who will perform this duty. Modulus simply represents two lines. आपको देखना है, if the value inside is negative, you show a minus sign outside. Minus multiply कर दो. This is function based definition. This is what we use to solve difficult problems. So what does it look like? See, if this is xy axis, if you give me y is equal to x mod, or if you give me fx is equal to x mod, how do we plot that? When x is equal to 0, y is also equal to 0. That is the origin. X is 0, y is 0, both are 0. When x is 1, y is also 1. When x is 2, y is also 2. When x is 3, y is also 3. So on the right side, it is a line that goes from the middle of coordinate systems. Basically, itna nahi padna, but if you want to know, this is 45 degrees. It goes exactly in the middle of coordinate system. This is the line where x and y both are equal. X is 1, y is 1. X is 2, y is 2. X is 3, y is also 3. But when you put x is equal to minus 1, you put minus 1 in the modulus. बाहर क्या बन जाएगा? 1. You put minus 2 in the modulus. बाहर क्या बन जाएगा? 2. So on the left side, it is again increasing. X is decreasing. X is becoming minus 1. X is becoming minus 2. Minus 3. It is decreasing on the left side x. But y is increasing. So do you see? It makes you feel like a V kind of shape is there. It's a symmetric shape where at the root point, this is the root point. This is the root point. When you make x is equal to 0, y becomes 0. That is the root point. So a mod increases on both sides of the root point. आराम से लिखो इसको. I want you guys to try and remember this. If the value inside is positive or 0, you make no changes. fx is equal to x. Mod opens without a change. If you put, or if you know that value inside is negative, तो बाहर एक minus multiply आपको करना है. It is you who will multiply the minus sign. So draw the graph, write down the sentence. A single modulus is symmetric across its root point. A single modulus is symmetric across its root point. A single modulus is symmetric about its root point. Comments done. ग्राफ पे भी ध्यान देना, learn from the graph as well.
Everyone confirm? Up to 3 mods is very common in CAT. Up to 3 mods. अब कैसे handle करते हैं when there is a value inside? If you come across fx is equal to, मैं फिलहाल कोएफिशिएंट अवॉइड करता हूं just for the sake of simplicity. I'm avoiding coefficient. Now please understand whether it is x minus 3 mod or it is 3 minus x mod. दोनों एक ही है बेटा. They are one and the same. They are one and the same. Both are same. Now, how does this work? Let us say this is given to you. This is given to you. Now look at the value inside. ये जो x minus 3 है is more than equal to 0. So x is more than equal to 3. If this is true, अगर ये सच है तो your fx will open without any kind of change. This is x minus 3. But यहां पे देखो, if x is less than 3, if this is the case, अगर ये केस है तो fx will open with a minus sign. इसके आगे आपको एक माइनस लगा देना है. तो अब इसे कैसे बोला जाता है? हाउ डू वी रीड दिस? 3 is the root point. आप जब x is equal to 3 कर दोगे, your fx becomes 0. This is called the root point of the mod language. On the right side, 3 से ऊपर, on the right side, modulus opens without a change. Wording पे ध्यान दो. On the right side of the root point, modulus opens without a change. On the left side, less than, x is less than 3. On the left side, the modulus opens with a minus sign. ये वर्डिंग पे ध्यान दो. कैसा होगा? I can show the graph as well. मैं आपको फिलहाल केवल लोकेट करके दिखा रहा हूं पॉइंट. x is equal to 3. यहां पे 0 होगा. This is the root point. इसके राइट साइड में the fx will open without any kind of change. ये आपका मॉड्यूलस ऐसा खुलेगा. On the left side, इसको इंक्लूड हमेशा देखो, इंक्लूड हमेशा राइट साइड में करना है. इसी को 3 will be included on the right side, not on the left side. मोर देन में इंक्लूड होता है कभी भी. ऑन द लेफ्ट साइड जब x का वैल्यू लेस देन 3 है, यहाँ पे x का वैल्यू मोर देन इक्वल टू 3 है, when x is less than 3, the fx opens with a minus sign. What does it mean in terms of graph? Graphically इसका क्या significance है? Vertical line, horizontal line. ये 0 कहाँ पे होगा? 3 पे. At x is equal to 3, this will be 0. On the right side, ये आपका ग्राफ ऐसा जाएगा. It will be fx is equal to x minus 3. On the left side भी ऊपर जाएगा. I'll tell you how. यहां पे होगा आपका fx is equal to minus x minus 3. जैसे आप यहां पुट करो वैल्यू को 2, पुट 2 इनसाइड, 2 पुट करोगे इसमें तो ये वापस 1 बन जाएगा. इसमें पुट करो 1 तो ये 2 बन जाएगा. इट इज इंक्रीजिंग. इसमें पुट करो 0 तो ये 3 बन जाएगा. इसमें पुट करो -1, पुट -1 इनसाइड तो ये 4 बन जाएगा. सो व्हाट वाज द सेंटेंस? मॉड्यूलस ग्राफ, अ सिंगल मॉड्यूलस इंक्रीजेस ऑन बोथ साइड्स. इधर जा रहे हो x की वैल्यू तो ऊपर जा रहा है ग्राफ. देखो द ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड्स. व्हेन यू गो टू द लेफ्ट साइड ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड्स. सो ये वाला हिस्सा कब काम आएगा? व्हेन आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इनइक्वालिटीज. When I am trying to solve inequalities. नीचे वाला भी काम आएगा. When I am trying to find maxima, minima और intersections. ये इक्वेशंस सॉल्व करने में काम आएगा. ये इंटरसेक्शन निकालना, ग्राफ निकालना, मैक्स मिनिमा निकालना, उसमें काम आएगा. लर्न बोथ अप्रोचेस.
Confirm on this. आप उसमें वैल्यू पुट कर देखो ना, पुट वैल्यूज इन दैट, पुट वैल्यूज ऑफ x इन बोथ. जैसे if I put x is equal to 3, they both become 0. If I put x is equal to 1, they both become 2. If I put x is equal to, let us say, some random number 5, 5, they again both become 2. I put minus 1. I put minus 1 in both. Minus 1 in both. They both become 4. बराबर तो है ना हर चीज में. In every aspect they are both equal. मॉड्यूलस के अंदर में माइनस मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता. It is the same equation. Chalo. Now, how do we use this when there are more than one mods? मैं आपको दिखाता हूँ in a minute or so. Inequality भी देखते हैं. Now, modulus and square, they work in the same manner. आपने inequalities के lecture किए हैं. We have done 3-4 lectures on inequalities and maxima minima, close to 6.5 hours. तो ये आपने देखा हुआ. When you have a square, square is more than equal to, let us say, some number 16. So x opens more than equal to 4 or less than equal to minus 4. If a square is less than equal to a number, ऐसा less than होता है, x opens between positive as well as negative values. That is how square inequalities work. We have seen all of this in theory examples of inequalities. Now, modulus and square have one thing in common. आप -3 put करके square करो, it becomes positive. आप -3 put करके mod करो, it becomes positive. So modulus works in the same manner as a square. So if you give me modulus x and say it is more than, let us say, a number 4, I will say x is more than 4 or x is less than -4. I'll explain this on graph as well. If I say x mod is less than 4, it will be x is between 4 and -4. Sorry, क्या बोल रहे हो आप? So here I am saying when you take x is equal to -4 and when you take x is equal to +4, you take 3 in this, you put 3 in this, so 3 is below 4. You put 2 in this, 2 is below 4. You put -3, देखो, you put -3 का mod, 3 is below 4. So whatever number you put in this range, they are all below 4. Here what we are saying is left hand side inequality. This is 4 and this is -4. I need the outcome to be more than 4. So I will have to walk outside this range. If I put 5, 6, 7, if I put 5 in this, it is more than 4. If I put 6 in this, it is more than 4. So the value inside the mod must be more than 4. Or when I put -5, imagine if I put -5, तो mod लग के क्या बन जाएगा? 5. Is 5 more than 4? Yes. If I put -6 in the mod, what is -6? 6. ये 6 बन जाएगा. Is 6 more than 4? Yes. So I need to walk outside the range. So when a modulus is more than a number, you walk outside the range 4 and 4.
When the modulus is less than the number, you work between the range. So this is the concept, this is the theory. X mod is more than k, x is more than k, or x is less than minus k. Minus k. When x mod is less than k, x is between k and minus k. So this part I'm highlighting now in white. This is the theory. The lower part I was trying to teach you with help of an example with comparison with 4. Take your time, jot it down. Comment once done. Everyone, write this down, confirm done. Confirmation, guys. चलो लेट अस ऐड मोर लेवल टू दिस. अभी मैं आपको ग्राफ अप्रोच भी सिखाऊंगा. इनइक्वालिटी बेसिक थ्योरी वी आर डन हियर. I want you to learn how to solve slightly complex questions. आगे भी है ये. What if you come across a question like this? X plus 2 mod plus x minus 3 mod is equal to some number. Let us say 10. आपसे पूछें for what value of x is this possible, या फिर आपसे पूछें sum of all values of x. तो आपने पहले 10 पे ध्यान मत दो. You need to first learn. I'll teach you two approaches. पहला वाला equation, second वाला graph. Learn both.
This is modulus 1. I'm calling it A. I'm calling this one B. Where will A become 0? A 0 कब होगा? When x is equal to -2. B कब 0 होगा? When x is equal to 3. So what I will do is I will imagine on the right side. Right side में ध्यान देना include करते हैं. X is more than equal to 3. क्योंकि I am on the right side. मैं इसके भी right side पे हूँ. When I am on the right side, both modulus should open without a change. Language, what is the language? On the right side of the root, modulus opens without a change. मुझे क्या चाहिए? Equal to 10 चाहिए. So 2x minus 1 is equal to 10. X is equal to 11 by 2, 5.5. Is 5.5 more than 3? एक बार चेक करना है आपको. तो this is your first solution. X is equal to 5.5. When I imagine a number between, देखो between में ध्यान देना. I am on the right side of this and I am on the left side of this. वही कैसे इंक्लूड होगा? -2 will be included क्योंकि मैं राइट साइड पे हूं, एंड 3 will not be because I'm on the left side. लेफ्ट साइड में रूट इंक्लूड नहीं होता, ये स्टैंडर्ड तरीका है. आई एम नॉट डिवाइसिंग दिस नाउ बिकॉज आई एम व्हाट, आई एम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सेकेंड ब्रैकेट. तो सेकेंड ब्रैकेट जो आपका है, मैं लिखता हूं, इट विल हैव अ माइनस साइन इन फ्रंट. ये माइनस साइन से ओपन होगा सेकेंड ब्रैकेट. I am on the right side. अगर कोई नंबर यहां लेते हैं, if I take a number of x here, it is on the right side, so it opens without any kind of change. ध्यान से देखो, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस x, और ये 2 + 3 हो जाएगा 5. इट्स अ कांस्टेंट नंबर. इस रेंज में अगर ये फंक्शन होता, इफ इट वाज अ फंक्शन, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू 5. ये कभी भी 10 के बराबर नहीं हो सकता. देयर इज नो सॉल्यूशन हियर. नाउ व्हेन आई गो ऑन द लेफ्ट साइड, x is less than -2. लेस देन में कभी भी इक्वल टू नहीं लेना है. सो दे बोथ ओपन विथ माइनस साइन. तो ये ओपन होगा आपका माइनस ऑफ x + 2, और ये ओपन होगा आपका माइनस ऑफ x -3. थोड़ा ध्यान देना, ये -x -2x, ये -2 और ये +3, -2 + 3 विच इज -2x + 1. अब ध्यान दो, look at this equation here, 2x - 1, and look at this equation here, -2x + 1. किसके बराबर चाहिए? 10 के. x इज इक्वल टू -4.5. तो आपका दूसरा सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू -4.5. व्हाट आर द 2 पॉइंट्स? एक है -4.5 और दूसरा है 4.5, और दूसरा है 5.5. तो अगर आपसे पूछे सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज, तो आराम से सॉल्यूशन को लिखो. आई वुड हाईलाइट वन पेक्यूलियर प्रॉपर्टी. कुछ नया सीखने मिलेगा आपको. हाईलाइट दिस, राइट दिस डाउन फर्स्ट, कमेंट डन. Comment done.
ये किया ना बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हियर आई हैव इंक्लूडेड 2। देखो ये नीचे यहाँ पे 2 इज इंक्लूडेड इन द लोअर पार्ट हियर। लेफ्ट साइड में नहीं होगा, लेस देन में कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। मॉड्यूलस की रेंज में ओनली राइट साइड इज इंक्लूडेड, लेफ्ट साइड इज नॉट। जो रूट है, हाँ, क्योंकि वो डबल काउंट हो जाता है। फिर कभी इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछेगा, नाउ प्लीज पे अटेंशन, मुझे आपको ये दिखाना था। डू यू सी ऑन द राइट साइड, ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड, ये 3 के राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द रेंज, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, आपको दिख रहा है -1 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे, इक्वेशन को रिवर्स कर दिया ना आपने, -1 मल्टीप्लाई कर दो। कीप इन माइंड, ये यूनिवर्सली ट्रू है। अब देखो, अब जो अप्रोच आएगी ये बहुत ज्यादा काम की है, ये ग्राफ बेस्ड अप्रोच है, और मैक्सिमा मिनिमा इससे निकालते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा इससे निकालते हैं। दिस अप्रोच आई एम टीचिंग यू नाउ। यू स्टार्ट इन द सेम मैनर। आप 10 को ध्यान मत दो, यू इमेजिन एफ एक्स इज देयर और यू इमेजिन वाई इज रिटर्न, यहां वाई लिखा है, ऐसा इमेजिन करो। फर्स्ट ब्रैकेट बिकम्स 0 एट -2, सेकेंड ब्रैकेट बिकम्स 0 एट 3। करना क्या है आपको, ये -2 को दोनों में पुट करना है। मैं क्या कह रहा हूं, y इज इक्वल टू, पुट -2 इन बोथ ऑफ देम, -2 + 2 mod प्लस -2 -3 mod विच इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू -2 होने पे y की वैल्यू 5 हो जाएगी, वैल्यू ऑफ y बिकम्स 5। नाउ टेक 3 एंड पुट इन बोथ, दोनों में पुट करो। यू पुट y इज इक्वल टू 3 + 2 मॉड्यूलस +3 -3 मॉड्यूलस, ये भी क्या बन गया, 5। अब देखो आप कैसे भी ओपन करो, इट इज मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अंदर में पावर 1 है, सो यू हैव टू, मॉड्यूलस प्लस हो माइनस हो, इट विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन, ऐसा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगा। अब देखो राइट साइड में आपकी इक्वेशन क्या आ रही है, 2x - 1। x को यहाँ पे 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, तो वो डबल होके बढ़ता जाएगा, तो इट विल इंक्रीज ऑन द राइट साइड, और लेफ्ट में भी इट विल बी इंक्रीजिंग हियर, ऐसा। ये यूनिवर्सली ट्रू है। वेन एवर मॉड्स आर एडेड, राइट साइड में क्या इक्वेशन है, 2x - 1, तो लेफ्ट साइड में क्या इक्वेशन है, -2x + 1। आप देखो इसमें पुट करो -5 -6 -7, तो वो डबल होके और बढ़ेगा, माइनस के साथ में प्लस हो जाएगा फिर से। सो बोथ साइड इंक्रीज, लैंग्वेज पे ध्यान देना। वेन एवर मॉड्स आर एडेड, वेन एवर मॉड्स आर एडेड, दे इंक्रीज ऑन बोथ साइड्स, इधर भी इंक्रीज है और इधर भी इंक्रीज है। अब देखो ये 5 तक गया, आपको कहां ले जाना था, 10 तक ले जाना था, तो 10 की वैल्यू राइट साइड में आएगी ना यहाँ कहीं पे, तो आपको सिर्फ इसको 10 के बराबर करना है। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी 10 के बराबर कर देना आपको। तो आपको हर जगह नहीं ओपन करना पड़ेगा, इट विल बी वेरी यूजफुल व्हेन देयर आर 3 मॉड्स एंड 4 मॉड्स। अच्छे से लिखो इसको, ग्राफ बेस्ड अप्रोच, जो रूट के पॉइंट है उनको पुट कर देना सीधा, पुट रूट पॉइंट्स इन द मॉड्यूलस और स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। मॉड्यूलस कभी भी प्लस होते हैं, दे इंक्रीज ऑन बोथ साइड्स।
सी बिटवीन -2 and 3 ग्राफ कहाँ पे अटका है? 5 पे। आपको किसके बराबर करना था? 10 के। तो राइट साइड में होगा, तो राइट साइड में इक्वेशन निकालनी पड़ेगी आपको। ऑन द राइट साइड व्हाट इज द इक्वेशन, ऑन द लेफ्ट साइड व्हाट इज द इक्वेशन, और 10 के बराबर कर देना है। Guys, moving on. Acha, one more thing. I have seen this actually in rough work. I have seen this in videos as well. ये जो आपने इक्वेशन देखी, आई हैव सीन पीपल ट्राई एंड सॉल्व इट लाइक दिस, एंड पीपल हु हैव बीन covering math content for 10 years. ये कैसा बनेगा? ये -2 पे v बनेगा। ये कैसा बनेगा? ये +3 पे v बनेगा, ऐसा। देन समहाउ इसके बीच में वैल्यू निकालना। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? ये क्या है ये? ऐसा कोई मेथड नहीं है बाबा। मैथमेटिक्स ये है, दिस इज प्रॉपर अप्रोच। तो अलग अलग ग्राफ को प्लस करना, ग्राफ को प्लस करना, देयर इज नो वे फॉर टू प्लॉट अ ओवरऑल ग्राफ। ये तरीका है आपका। मूविंग ऑन। कंफर्म, डन। Everyone confirm? Yeah. So some very basic 1 or 2 questions. Give it a try. Take 1 to 2 minutes. Simply practice whatever has been covered in theory. Some examples based on that.
कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, हमें केवल रेंज निकालना है x का. What is happening here? The first one says -4 और 4 के आउटसाइड होना चाहिए सॉल्यूशन. सेकेंड वन सेज बिटवीन -8 एंड 8, इसके बिटवीन होना चाहिए सॉल्यूशन. सो वी ऑलवेज कंसिडर ओवरलैप. ओवरलैप कहां पर है? यहाँ पे x belongs to -8 to -4, x belongs to -8 to -4, or means union, it belongs to 4 to 8. ये आपका सोल्यूशन. बस ये चाहिए था हमें. इनइक्वालिटी के फॉर्म में यू वांट टू राइट x is between -4 and -8, इक्वल नहीं आएगा, -8, और x is between 4 and 8. दोनों एक ही बात कर रहे हैं, वन एंड द सेम. वी ऑलवेज कंसिडर कॉमन ओवरलैप. ये 4 के राइट साइड जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये -4 के लेफ्ट साइड जा रहा है इनफाइनाइट तक. द कॉमन ओवरलैप इज हियर. ये कॉमन ओवरलैप है. इजी इनफ. कमेंट डन. वर्बली बन जाएगा. दिस यू कुड डू वर्बली. Done. Try this. Now, in such questions, I will say you start with graph method. Forget for the time being there is an inequality. Imagine this is equal to y. You will be able to save couple of steps with this. और equations लिखने की जरूरत नहीं है.
When will this become 0? -1. दोनों में पुट कर दो -1. When you put -1 here, -1 here, y becomes 4. बच गए 2-3 steps. This becomes 0 when x is equal to +3. दोनों में 3 पुट कर दो. Put 3 here, put 3 here. This becomes 4, this becomes 0, 4. Now you remember, whenever mods are added, they increase on both sides. Nice. So see, now I'll bring the 9 part. Here if you notice these, the yellow part I'm highlighting, it is fixed, it is 4. The value of y is 4, it can never reach 9. तो 9 कभी right side में यहाँ पर आएगा ना, 9 will be here. So you open both on the right side. On the right side, they open with plus sign. Add both. 2x minus 2. What did you want? You wanted it to be below 9. ये y का value, this is value of y. और y क्या हमें 9 से कम चाहिए. So आपका आ जाएगा x, you will have x less than 11/2. अब मैं आपको ये सिखा रहा था, प्लीज पे अटेंशन टू दिस पार्ट. This equation here, this part, when you go to the left side, ये negative हो जाएगा. It will become -2x + 2. जो extreme right side है, extreme left side है, sign changes. आपको चाहिए था below 9, तो आपको आ गया -2x is below 7. Pay attention. X is more than -7/2. ये हमने किया inequalities में. When you multiply or divide a minus value, negative value, sign reverses. तो आपका range आएगा x का between -7/2 and between 11/2. That is your range. X belongs to -7/2, 11/2. ये आपका range है, ये आपका range है. ये ध्यान दो, on the right side, whatever is given, on the left side, sign changes. Now I can do it with something called as difference method, distance method, but it becomes very complicated अगर ये x जगह 2x बन जाएगा वहां पे. तो if it becomes 2x - 1, if it becomes 2x + 5, तो वो बहुत complicated हो जाता है आपके लिए method, distance method. So you stick with the current method. ग्राफ बनाने से क्या होता है, you get an idea to what point is value of y changing. Confirm done. अब एक और रूल देखो, in the previous one and in the current one. यहां पे देखो, ये 0 कहां पे होगा, -2. ये 0 कहां पे होगा, 3. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑन द नंबर लाइन इज 5. तो अगर मॉड्यूलस है केवल प्लस हो रहे हैं, मॉड्यूलस है केवल प्लस हो रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स इज द मिनिमम वैल्यू. ये आपका मिनिमम वैल्यू है. अभी 3 होंगे तो कैसा होता है, आई विल शो यू. वी हैव क्वेश्चंस फॉर दैट, बहुत क्वेश्चन हमारे पास. अभी दो पॉइंट है. लेट अस से वन ऑफ योर पॉइंट्स इज ए, जहां पे मॉड्यूलस का 0 बन रहा है. दूसरा पॉइंट इज बी. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y. क्या रिक्वायरमेंट है, मॉड प्लस होना चाहिए और कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. ये सब याद नहीं करना है, तो लर्न टू ड्रॉ द ग्राफ. तो यहां पे देखो, ये 0 कहां पे होगा, -1 पे. ये 0 कहां पे होगा, 3 पे. इन दोनों के बीच गैप कितना है, 4. तो ये 4 बना रहेगा बीच में हमेशा.
Others confirm? Good. Yellow. Try. Range of x for the following inequality. Abhi, see, if you use the inequality approach, you try to open value of x in every range, मेहनत डबल हो जाएगी. You think in terms of graph, ये जल्दी बनना शुरू हो जाएगा आपसे. So for the time being, you forget this and you forget this. You focus only on the middle part. This will become 0 when x is equal to 1. इसका root है 1. इसका root है -1. Now you put both. Put -1 in both. -1 यहाँ और यहाँ रखोगे. The value will become 2. The value will become 2. Connect and draw. ऐसा ग्राफ बनेगा. Now what did I want? I want x to be between 3 and 8. आपको दिख रहा है यहाँ पे तो 2 है, तो 3 इधर कहीं आएगा, 8 और भी आगे जाके आएगा. So I am on the right side of the root point. Right side में it opens without a change. कैसे open होगा ये? x minus 1 plus x minus x plus 1. ये बन जाएगा 2x. I want this 2x to be more than 3 and I want it to be less than 8. x का वैल्यू क्या होगा? Between 4 and 3/2. अब लेफ्ट साइड में क्या होगा? प्लीज ऑब्जर्व, ये ध्यान दो. ये जो आपने बीच में लिखा है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा. इट बिकम्स, यहां लिखता हूं मैं आपके लिए, -2x. इट शुड बी मोर देन 3 एंड लेस देन 8. अब जब आप डिवाइड करते हो -2 से, तो ये रिवर्स हो जाएगा. This will be on the right side and this will be on the left side. रिवर्स हो जाएगा. तो आपका x का रेंज क्या आ गया? x का रेंज आ गया -4 to -3/2 और
3/2 to 4, ऐसा। तो ग्राफ का हेल्प लेने से ना बहुत जल्दी क्वेश्चंस बनते हैं। प्योर इनइक्वालिटी से आप बनाओगे तो काफी जगहों पे स्टेप्स पे रुक रुक के चेक करना पड़ेगा आपको वैल्यूज को। नहीं बेटा, हैबिट डालो ग्राफ बनाने की, क्योंकि ये प्लस का माइनस हो गया ना, सब कबाड़ा हो जाएगा। दिस बिकम्स माइनस, कबाड़ा हो जाएगा सारा। या फिर यहाँ पे वन ऑफ द ब्रैकेट बिकम्स दिस, ऐसा कोएफिशिएंट आ गया, प्रॉब्लम होगा। ग्राफ का हैबिट डालो। यू आर एबल टू डू दैट, नॉट everyone can do this. Everyone confirm you're done with the solution, done with the example. Moving on. ये लो, क्योंकि सिंगल मॉड्यूलस है, इसमें कुछ ज्यादा तामझाम करने की आपको जरूरत है ही नहीं।
Again, I can think of 2-3 ways to approach this. ग्राफ से करोगे फिर जल्दी बनेगा. First method, I will solve this separately. X plus 3 is between 9 and minus 9. 3 minus कर दो. This is the range of x. मैं दूसरी बार इसको solve करूंगा. X plus 3 is more than 3. X is more than 0. Or x plus 3 is less than minus 3. So x is less than minus 6. So on the number line, ये कैसे दिखेगा? The first one is between minus 12 and 6. ये first का range है. Second का range क्या है? 0 से right side और minus 6 से left side. तो x का क्या रेंज आ जाएगा? -12 to -6 और 0 to 6. That is the range of x. Second method, देखो ये 0 कहां पे होगा? Forget this. ये y के बराबर है, तो इसका रूट पॉइंट है -3. तो ये ऐसा ग्राफ जाएगा आपका, ऐसा ग्राफ जाएगा. तो हमें राइट साइड पे जब वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, तो ये बेसिकली सेइंग x plus 3 is between 9 and 3. तो क्या हो जाएगा? x is between 0 and 6. अब लेफ्ट साइड थोड़ा संभल के, बेटा -3 पहले आएगा कि -9 पहले आएगा? -3 पहले आएगा, क्योंकि मॉड है ना, मॉड ओपन्स ऑन बोथ साइड्स. अब क्या हो जाएगा हमारा? ये माइनस हो जाएगा. -x plus 3 is between 9 and 3. वही आएगा, माइनस कैंसिल करके ये वाली वैल्यू आएगी. -3 x plus 3 रिवर्स हो जाएगा. 3 माइनस कर दो. You're getting the same range. ये देखो. You want to stick with this? Perfectly fine. सिंगल मॉड है, लिया ना बेटा? -9 लिया ना, ये रहा ना -9, ये रहा ना -9. मॉड ओपन्स ऑलवेज विद प्लस एंड माइनस बोथ. याद नहीं क्या आपको? We covered the inequality in the start of lecture. Mod always opens with plus and minus both. Moving on. Give it a try. अभी अगर कैट में क्वेश्चन आता है तो देयर विल बी अनदर टर्म, समथिंग लाइक दिस विल बी देयर. अब कुछ कंडीशन बोलेंगे. तो कैट में क्वाड्रेटिक एंड मॉड मिलाकर बहुत आता है. इट इज वेरी कॉमन इन कैट टू हैव क्वाड्रेटिक एंड मॉडुलस कंबाइंड.
ऑप्शंस दिए हैं, यू आर गुड विथ ऑप्शंस, ट्राई इट, सी इफ इट वर्क्स फॉर यू. देखो, सबसे आसान चीज क्या होती है? पुट करना वैल्यू 0. 0 +1 -1 सबसे आसान होता है. बट देखो, -1 इज एट द एक्सट्रीम, इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, तो 1 -1 पुट मत करो. यहां पे देखो 0 इसके बीच में आता है. इफ आई पुट 0 हियर, 0 पुट कर दिया मैंने, तो ये वैल्यू बन गई 2. तो 2 फुलफिल कर रहा है क्या रिक्वायरमेंट ऑफ द इनइक्वालिटी? नो. तो 0 इज नॉट पार्ट ऑफ माई आंसर. अगर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो इजियर हो रखना, तो देखो रेंज 1 और 2 के बीच में और -1 और -2 के बीच में, तो हाफ रख के देखो. इफ आई पुट हाफ, यहाँ हाफ रख दिया, हाफ का स्क्वायर 0.25, हाफ इंटू 3 1.5 +2. देखो, इज इट नेगेटिव फॉर यू? इज इट नेगेटिव? मैंने क्या रखा? x इज इक्वल टू हाफ. इसके अंदर में हाफ आता है और इसके अंदर में भी हाफ आता है. आई हैव पुट हाफ हियर. बन रहा है क्या? नेगेटिव बन रहा है क्या? अभी भी आपका वैल्यू 0.75 है ना, विच इज पॉजिटिव. इज इट बिलो 0? नो. तो ये दोनों कट गए. तो ओनली आंसर पॉसिबल इज दिस. अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये भी आंसर इनइक्वालिटी गड़बड़ देने वाला है, क्योंकि नेगेटिव तो इसमें काम ही नहीं करेगा. लेट मी ट्राई. इफ आई पुट -1/2 इन दिस, -1/2, तो ये तो बिलो 0 कहीं हो ही नहीं रहा है. आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस कोई भी ऑप्शन नहीं है बेटा. आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस कोई भी नहीं है. यू पुट x इज इक्वल टू -1/2. 0.5 का स्क्वायर 0.25. अब 0.5 इसमें नेगेटिव पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो मॉड के बाहर तो प्लस आएगा ना. 0.5, तो -1.5 +2. इज इट बिलो 0? नो. तो आउट ऑफ द चॉइसेस तो कोई भी नहीं है. लेट अस से मुझे सॉल्व करना है, तो ऑप्शन पुटिंग में ऑप्शन प्लेसिंग मिस्टेक, ऑप्शन है नहीं यहाँ पे हमारे पास. अगर सॉल्व करना है तो कैसे करना है? वी आर मेकिंग सम कैलकुलेशन मिस्टेक्स हियर. लेट मी चेक इट फॉर यू. देखो देखो स्क्रीन पे मॉड्यूलस केवल यहां पर है. देयर इज ओनली वन मॉड्यूलस. तो आपको दो केस लेना है. पहला, x इज मोर देन इक्वल टू 0, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? x² -3x + 2 < 0. तो हाउ डज दिस ब्रेक? x -1 इंटू x -2. तो ये आपका वेवी कर्व बन के आएगा 1 पे 2 पे प्लस माइनस प्लस. आपको बिलो 0 चाहिए, वो ये रेंज है, वो ये रेंज है. एंड इज दिस सेट ऑफ वैल्यूज मोर देन 0? x का ये भी तो ट्रू होना चाहिए ना. आपने एज्यूम करके इसको ओपन किया तो इट इज ट्रू. x बिलोंग्स टू 1 to 2. अरे कि फिर 1/, अरे हाफ नहीं पुट करना है भाई, 1 1.1/2 रखना है, 1 1/2.
ये पुट करना, अभी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं अपन, 1 रखना है ना, 1 से ऊपर चाहिए। चलो सॉल्यूशन राइट साइड पे ध्यान दो, लेफ्ट साइड में अपन ने वैल्यू पुट करने मिस्टेक करी है, लेट्स अवॉइड दैट। हाँ, सेकंड केस में आपको अज्यूम क्या करना पड़ेगा, x इज बिलो 0। अब ये ध्यान दो, अब इधर राइट साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो मॉड्यूलस कहां पर है, वेयर इज मॉड्यूलस फॉर यू, ये मॉड्यूलस है, केवल इसका साइन चेंज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बिलो 0। तो ये फैक्टराइज कैसे होगा, हाउ विल दिस फैक्टराइज, x प्लस 1 x प्लस 2, इसके रूट क्या होंगे, -1 -2 प्लस माइनस प्लस, ये आपका रेंज है, x बिलोंग्स टू -2 टू -1। अब आपने क्या अज्यूम किया था, x इज नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव है, यस। क्या अज्यूम किया था, x इज पॉजिटिव, यहां पे देखो ऊपर में x इज पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव है, यस। तो ये आपका रेंज है, दिस इज योर रेंज। ऑप्शन सी, हमें 1.5 रखना था वहां पे, 1.5। वी नीड टू पुट 1.5 नॉट हाफ, 1 और 2 के बीच में है ना। Guys, confirmation on this? Yeah, try this. इसमें भी एक छोटा प्रॉब्लम है, नन ऑफ दीज का। If options were definite, I would have tried to do that. I would have tried to put options in this.
सो एक चीज आप नोटिस करो, देयर इज मॉड्यूलस ओनली इन वन प्लेस इन बोथ इक्वेशंस, सिमेट्रिक दिख रहा है, यू सिंपली रीअरेंज, आप इस पूरे को राइट साइड लेके आ जाओ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स ओनली एक्स स्क्वायर, ये जब राइट साइड जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, +4 -2 इज +2 mod x, ये 6 जब इधर आएगा तो इट विल बिकम -6, तो 3 - 6 इज -3, अभी हमें क्या चाहिए, बिलो 0, क्योंकि इसको आपने राइट साइड भेजा तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा 0। अब एक बात समझो, एक्स स्क्वायर भी चीजों को पॉजिटिव करता है और मॉडुलस भी पॉजिटिव करता है, तो आई कैन री राइट दिस साइड एज, थोड़ा ध्यान देना, एज दिस, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप कर सकते थे, आई हैव रिटन दिस इन दिस फॉर्मेट। नाउ आई कैन ब्रेक इट डाउन, आई कैन ब्रेक इट डाउन, देखो बीच वाली जो पोजीशन होती है इट इज एडिशन रूट विद माइनस साइन, और लास्ट वाली पोजीशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स हैं इसके, यू कैन क्लियरली सी -3 into 1 -3 + 1, तो ये इक्वेशंस क्या बनेंगी, ध्यान से, mod of x +3 ब्रैकेट, mod of x -1 ब्रैकेट, ये हमें क्या चाहिए, हमें 0 से कम चाहिए, ये 0 से कम चाहिए, तो अब जो रेंज आ रही ना आपकी मॉड की आ रही बेटा, ये जो एक्सेस है ये मॉड का है, ध्यान से देखना भी आप, ये 0 कहां पे होगा, -3, 0 कहां पे होगा, 1 पे, प्लस माइनस प्लस, तो आपका जो मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स इट इज बिटवीन 1 एंड -3, अब क्योंकि मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपका आएगा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, ये आपका आंसर आएगा। तो एक नया अप्रोच सीखो, ये वाला भी, लर्न दिस अप्रोच, आप केवल स्क्वायर के नीचे मॉड लगा दो, स्क्वायर के अंडर में मॉड लगा दो और पूरा मॉड से सॉल्व कर दो। अल्टीमेटली ये कौन सा मेथड, व्हाट मेथड इज दिस, वेवी कर्व मेथड, वेवी का वो प्लस माइनस वाला, वी हैव लर्न दिस इन इनइक्वालिटीज। X mod is less than 1, इक्वल नहीं होगा बेटा 1 के, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पे देखो, हियर यू नोटिस, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू में, यहाँ इक्वल टू साइन कहाँ है, देयर इज नो इक्वल टू साइन हियर, तो इक्वल नहीं होगा, इट विल नॉट बी इक्वल।
कंफर्म डन। बेटा -3 से तो हमेशा ग्रेटर रहेगा ना मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैन नेवर बी नेगेटिव, मॉड्यूलस कैन नेवर बी 0। Try this. अभी दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व 3 inequalities. क्यों करना है सॉल्व आपको? Why do you want to solve 3 inequalities? Look at options. Do something about options. This option, this option, and this option, they come with value x is equal to 0. मैंने 0 पुट कर दिया. Is 0 less than 6? Yes. यहाँ 0 पुट कर दिया. Put 0 here, put 0 here. Is -12 less than 0? Yes. Put 0 in these. यहाँ 0 पुट कर दिया. -2 into 1 into -6, which is 12. Is 12 more than 0? Yes. So x is equal to 0
is part of my answer. My answer must have x is equal to 0. तो ये दोनों बाहर हो गए. अब वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो एक में हो और दूसरे में ना हो. This one stops at -2. This one stops at -1. This one goes to -5. मैंने x को ले लिया -3. ऐसे -3 ले लिया, इसमें पुट कर दिया. तो -3 का मॉड इज इट लेस देन 6? यस. यहां रखता हूं -3 तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 9. यहां रखता हूं -3 तो इट विल बिकम 12 एंड -12. अब ये बिलो 0 है क्या? इज इट बिलो 0? नो. तो -3 मेरे आंसर में नहीं बैठा, तो ये भी बाहर हो गया. अब इन दोनों में क्या फर्क है? दिस इज गोइंग अप टू 6, दिस इज गोइंग अप टू 2. 2 मत रखना, 2 तो दोनों के अंदर में आएगा ना. 3 पुट करके देख लो, ये वैल्यू 3 तक नहीं जा सकती, ये 3 से भी आगे जा रही है. आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू 3. तो 3 का मॉड इज इट बिलो 6? यस. इसमें रखा मैंने 3, इट बिकम्स 9 -12 -12. थोड़ा ध्यान से, मैंने 3 रखा बेटा, यहां 3 रखा है. इज इट नेगेटिव? यस. पुट 3 इन दिस. 3 पुट करो इसमें. पहला वैल्यू बन गया -1, दूसरा वैल्यू बन गया 4 और तीसरा वैल्यू बन गया -3. तो इनका मल्टीप्लीकेशन है 12. इज 12 पॉजिटिव? यस. तो 3 इज पार्ट ऑफ माई आंसर. इसमें 3 नहीं आता, 3 इसमें आता है. दैट इज माई आंसर. तो वैल्यू कैसे पिक करना, थोड़ा वो चीज पे ध्यान दो आप. यू लुक एट एक्सट्रीम्स. कौन सा एक्सट्रीम इंक्लूड है, कौन सा नहीं है. अब मान लो 3 आंसर में नहीं बैठता, तो आई विल मार्क E एज माई आंसर. 3 बैठ गया तो आई विल मार्क D एज माई आंसर. You want to solve it through equations, you can do that. कोई बहुत बड़े सवाल तो नहीं है, बट एक एक आपको कॉमन ओवरलैप निकालने में टाइम लगेगा. यू वांट टू सॉल्व दिस. आपका पहला इनइक्वालिटी आएगा बिटवीन 6 एंड -6. दूसरे वाले को फैक्टराइज थोड़ा सिंपल के करना. दिस लुक्स लाइक x -6 इंटू x +2 ऐसा. एंड थर्ड वन थोड़ा वेवी कर्व है, तो मैं शुरू थर्ड वन से करता हूं. ये मैंने ड्रॉ कर दिया x एक्सिस. ये 0 कहां पे होगा? 2 पे. ये 0 कहां पे होगा? 6 पे. ये 0 कहां पे होगा? -1 पे. प्लस माइनस प्लस माइनस. हमें क्या चाहिए? वी वांट मोर देन 0, मोर देन इक्वल टू 0. मतलब कि हमें ये येलो वाला रेंज चाहिए और हमें ये रेंज चाहिए. ये थर्ड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द थर्ड वन, येलो वाला रेंज है. अकॉर्डिंग टू दिस ये 0 कहां पे होगा? 6 पे. ये 0 कहां पे होगा? ये वाला 0 होगा -2 पे और 6 पे. ऐसा होगा ना, प्लस माइनस प्लस. तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वन हमें ये रेंज चाहिए.
We want this range. नेगेटिव चाहिए हमें, ये रेंज चाहिए, वी वांट दिस रेंज. प्लस माइनस मिस्टेक करी बेटा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे चेक करना 3 को पुट करके हम प्लस माइनस मिस्टेक करी है क्या, चेक करना. यहाँ पे 3 को पुट करके बेटा ये +1 बनेगा ना. 3 डज नॉट फिट, ये आपका आंसर आएगा. 3 डज नॉट फिट, ये आपका आंसर आएगा. यहाँ देखो अभी ये बोलता है बिटवीन -6 and 6, ये आपका आ गया. ये मैंने रेड कलर से ऐसा कर दिया, बिटवीन -6 and 6. ये तो देखो तीनों कलर्स का ओवरलैप कहां पर है. ओनली दिस पोर्शन इज द ओवरलैप ऑफ ऑल थ्री. दिस पोर्शन इज द ओवरलैप ऑफ ऑल थ्री. -1 to 2 आएगा बेटा. 3 पे ये गलत हो रहा है. 3 पे देखो when you put 3 in this, so it is no longer positive, नेगेटिव बन जा रहा है. -1 to 2 is the answer. ये आपका आंसर है. अच्छा वो सॉल्व कर दिए तो गलत आंसर ले आते हैं आप लोग. It's a good thing I solved it for you. Look at the solution. The answer is between -1 and 2. Now we have a new concept to cover. ये कल पिकअप करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बेस्ड मॉड्यूलस. ये वाले these concept. ये सारे I'll teach you all these, how these graphs are plotted. थ्योरी आज कराऊंगा, क्वेश्चंस कल कराऊंगा, कनेक्ट नहीं बैठेगा. ये सारे these you can try if you want. ये वाला आपने दो मॉड वाला आपने देख लिया है. 3 मॉड वाला आप ट्राई कर सकते हैं if you want. बाकी शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बेस्ड अपॉन मॉड्स ये थ्योरी लेगा अराउंड 15 to 20 minutes, मे बी अ फ्यू मिनट्स मोर, 20 minutes के आसपास. Highest number of mods I have seen, 4 in CAT exam. 4 mods. Done. I'll see you guys tomorrow. Good night, guys.